Hi बच्चों, my name is Samujjul and I am from Guwahati, Assam. So आज हम लोग पढ़ेंगे arithmetic progression not for class 11 but for class 10 students. Okay, so this is a very interesting chapter, so you should focus on this chapter a lot. So today I will show you how to solve such good problems of arithmetic progression. First, let's clear the basics. So let's begin. So as you can see, it's arithmetic progression for class 10 students, not for 11 students. Okay, so let's begin. So what do we mean by arithmetic progression, right? Progression means it's a sequence. See, if I give you some numbers 1, 2, 3, 4. So these 4 numbers, they are in arithmetic progression or in arithmetic sequence. Q, because first number is 1, right? The second number is 2. Third number is 3. You can see the numbers are increasing by 1, or the difference between any two numbers is nothing but 1. So you can see दो नंबर्स के बीच में हमेशा, मतलब दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में हमेशा जो डिफरेंस आता है वो हमेशा फिक्स होता है, राइट? इट कैन बी 0, 1, नेगेटिव, एनीथिंग, बट इट हैज़ टू बी ए फिक्स नंबर. मतलब these two are consecutive, right? These two are consecutive, but 1 and 3 are not consecutive. We are talking about consecutive numbers. So 1, 2 consecutive, 2, 3 consecutive, 3, 4 consecutive. So the difference is always fixed. It's a common difference. Okay, so that's why these numbers are called as CD, which is known as common difference. All right. So let me give you another example. Let's say the numbers are 1, then 3, 5, 7, 9 and 11. So basically, can you say me that are these numbers in arithmetic progression? अच्छा, arithmetic progression का और एक नाम है जिसको हम लोग बोल सकते हैं AP in short form. All right. So are these numbers in AP or in arithmetic progression? Yes, because इन दो के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है that is 2. इन दो के बीच में भी डिफरेंस देखो तो that is 2. इन दो के बीच में भी डिफरेंस 2. सेम गोज फॉर दिस 2 ऑल्सो. सो ये कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स. सो दिस इज कॉल्ड एन एपी. ओके, चलो अभी कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं. Then the concepts will be solved, right? It will be pretty clear. So I hope तुमने AP को समझ लिया है थोड़ा बहुत ही सही. So we'll do some questions and then it will be pretty clear. All right? चलो. So the first example is example 1. So 3 by 2, 1 by 2, minus 1 by 2, minus 3 by 2 and so on. So ये डॉट का मतलब है कि नंबर्स चल रहे आगे की तरफ.
they're not stopping somewhere. Okay, this dot means that. So is this sequence an AP? If yes, write the first term and the common difference. So क्या ये सीक्वेंस AP है? देखो AP के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि दो जैसे फर्स्ट दो राइट देयर कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो उन लोगों का डिफरेंस निकालो. देयर इज हाफ माइनस 3/2 विल गो इन दिस ऑर्डर, सेकेंड माइनस फर्स्ट. So this is nothing but minus 2/2, which is minus 1. So this difference is minus 1. Alright? So अब हम लोग अब देखो फर्स्ट और सेकंड का तो हो गया, कॉमन डिफरेंस -1 है. नेक्स्ट the 2 and the third, second and the third consecutive numbers का common difference कितना होगा? Let's find it out. So minus half, which is minus 2/2, which is minus 1. So this is minus 1. Again similarly, minus 3/2 minus half, which is minus 3 plus 1/2, which is minus 1. तो इन दोनों के बीच में भी जो कॉमन डिफरेंस है वो आ रहा है -1. इसका मतलब क्या है? ज़्यादा टर्म्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट फाइंड दी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कॉमन डिफरेंस. इफ़ दे आर फिक्स्ड और इफ़ दे आर कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब है कि इट्स एन AP. Simple. Okay, so it means that this is an AP. Yes, this is an AP. And can you write the first term? First term is this term. Okay, first term का मतलब जो पहला टर्म आता है AP का वो first term होता है. So the first term is going to be 3/2 and the common difference is going to be -1, which we have found it out. All right, so please note it down. So I think it is pretty clear right now. So we'll move to the next question. So example number 2. Okay, example 2. Which of the following list of numbers form an arithmetic progression if they form an AP
write the next two terms. So पहला है 4, 10, 16, 22 and so on. So the question says that, question क्या बोल रहा है, which of the following list of numbers form an arithmetic progression. तो क्या ये numbers, क्या ये sequence एक AP है, if they are, write the next two terms. So solution में जाते हैं. Okay, sorry. चलो, we'll take a look at the answer now. So देखो, 10 minus 4 is 6, right? So the common difference is 6. Here is also 6, this is also 6, this is also 6. इसका मतलब है this forms an AP. अब next two terms को कैसे निकालें? See, the sequence is 4, 10, 16, 22, right? See, the difference is always 6, right? तो next term क्या होगा? Next term का भी difference 6 ही आना चाहिए. It means it has to be 28, because 28 minus 22 is 6, right? Or you can do one thing, just add plus 6 to it, because this difference is plus 6, not negative number but a positive number. Next, 28 plus 6 will be 34, and the sequence goes like that, right? Simple. चलो फिर नेक्स्ट लिस्ट ऑफ नंबर्स पे जाते हैं. So second is 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Does this sequence form an AP? No, because इन दोनों का कॉमन डिफरेंस तो ठीक है, 0 है. This two also forms 0, this two forms 1. It means that आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अगर distinct or different common difference आ गया, it means that this sequence is not an AP, right? So we need not find the next terms. चलो फिर नेक्स्ट सीक्वेंस पे चलते हैं. So the next sequence is 3 plus 2 root 2, sorry 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2 and so on. Okay, अब यहाँ पे देखो, what is the difference of these two numbers? It is 3 plus root 2 minus 3, right? The difference is root 2. Okay, और एक बात, जब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, मैं उसका concept को समझा रहा हूँ, right? In the exam hall, you have to write it by yourself, how you were taught in school. Okay, I'm just brushing up the concepts. So यहाँ पे कॉमन डिफरेंस रूट 2 आ रहा है. इन दोनों का कितना आ रहा है? 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2. दिस इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी रूट 2. इट मीन्स दैट दिस इज एन AP. और नेक्स्ट टर्म क्या होगा? जस्ट दैट रूट 2 टू इट. सो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 3 प्लस 4 रूट 2, देन 3 प्लस 5 रूट 2 एंड सो ऑन.
चलो एक लास्ट कर लेते हैं यहाँ पे। So the last one is √3, √6, √9, √12 and so on. So यहाँ पे देखो, यहाँ पे irrational numbers है. So let's find the first common difference. There is D will be √6 minus √3. Simple. तो यहाँ पे देखो, can we do some calculations here? Of course we can, because √6 is nothing but √3 into √2, isn't it? So this common difference becomes, so this thing is common, so it will be √2 minus 1. Okay? अब सो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकल गया, दैट इज √3 इंटू √2 माइनस 1. इन दोनों का कितना होगा? सो √9 इज 3, राइट? So 3 minus √6, that is 3 minus √3 into √2. So this can be written as √3 into √3 minus √2. Let's take this as 1 and 2. So देखो, ये कॉमन डिफरेंस और ये कॉमन डिफरेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, राइट? So this is not an AP. Okay, so we need not find the next two terms of this sequence. I hope यहाँ तक क्लियर है. Okay, so next question की तरफ बढ़ते हैं. Actually not question. So next जो टॉपिक है, that is nth term of an AP. तो जब मैं एक AP का बात कर रहा था, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो क्या मुझे ये nth टर्म, मैंने तो अभी तक बोला नहीं है, राइट, कि व्हाट इज़ द लास्ट टर्म, और जो भी इन्फिनिट में नहीं, मान लो एक लास्ट टर्म है. ओके, मान लो, सो मान लो कि दिस इज द लास्ट टर्म, इसके बाद कोई टर्म है नहीं. सो दिस इज कॉल्ड द nth टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस. ऑलराइट, I don't know उसके बाद होगा कि नहीं, but I assumed this is the last term of that AP. Okay? तो क्या तुम इसका nth टर्म निकाल सकते हो? I believe जब ये 1 हुआ था, मतलब फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म इज 2, थर्ड टर्म इज 3, तो व्हाट विल बी दी nth टर्म? nth, जैसे यहाँ पे होता था फर्स्ट, सेकेंड एंड सो ऑन अप टू nth. तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, nth टर्म कितना होगा? n ही होगा. सिंपल मैन, n ही होगा. तो अब अभी हम लोग क्या करेंगे, एक AP मान लेते हैं. ऑलराइट, उस AP का फर्स्ट टर्म है A, सो कॉमन डिफरेंस है D. यू कैन सी इट्स ऑलवेज D. सो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? D ऐड करते रहो.
a plus 2d, a plus 3d, and so on. So can you tell me the nth term in this AP, right? So if you observe the first term is nothing but denoted by T1, remember it, okay? So ये हो गया A, second term कितना होगा? T2 होगा, suffix में 2, this thing is called suffix. So second term is A plus D. What is the third term? A plus 2D, right? So ऐसे numbers आगे बढ़ रहे हैं. So can you now tell me what is the nth term? See, first term में कोई ये factor नहीं है, D नहीं है. Second में है, but it is less than 1 less than 2. Third में 1 less than 3. मतलब ऐसा हो रहा है कि T1 can be written as A plus 1 minus 1 of D. Next, T2 can be written as A plus 2 minus 1 of D. This one, I'm circling it, okay, so that it looks somewhat easy. So वैसे करके हम लोग को nth term कितना होगा? A plus 2 में 2 minus 1, 1 में 1 minus 1. So n में क्या होगा? n minus 1 of D. So this is the nth term of an AP, of any AP I can say. If they are in this form, they will always be in this form, isn't it? So this is the nth term. Please take a note. सो ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, मैंने जैसे समझा, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. सो लेट्स मूव टू सम क्वेश्चंस. So example 1, okay. So an AP is given, say 2, 7, 12 and so on. Find T10. So देखो, this is given already an AP. So इसका 10th term निकालना है. So I've said you T suffix में कोई भी number हो, that is the nth term of that sequence. तो यहाँ पे 10 है, मतलब 10th term. The formula is A plus, ये 10 minus 1 into D होगा. So A plus 9D. अब A और D तुम्हें निकालना है AP से, बस इतना ही करना है तुमको. So A कितना है? 2. This is nothing but A. And common difference is 5. So 45 plus 2 is 47. All right. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं.
That is example 2. So an AP is given, say 21, 18, third term is 15, and so on. Which term of the above AP is minus 81? सो देखो यहाँ पे एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है एपी। पहला तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर गौर करो। Which term of this AP above AP is minus 81? मतलब ऐसे सीक्वेंस जा रहे, यू कैन सी द नंबर्स आर डिक्रीजिंग। द फर्स्ट टर्म इज 21, ओके, एंड द कॉमन डिफरेंस इज -3। कोई भी दो नंबर्स ले लो कंसेक्यूटिव, उसका डिफरेंस निकाल लो, लास्ट माइनस फर्स्ट, सो दैट विल बी द कॉमन डिफरेंस, राइट। तो अभी पूछा है कि व्हिच टर्म, मतलब कौन सा टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, कौन सा टर्म इज -81। सो हम लोग क्या करेंगे, nth टर्म को मान लेते हैं -81। I have said your nth term is the last term, right? But sometimes it becomes useful in finding the n, which is the position of that number in that sequence. कौन सा टर्म है वो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा नंबर है। सो इसीलिए n निकालना है तो ये टेक्निक लगा सकते हो। सो nth term will be a plus n minus 1 into d, which is -81। अब a कितना है, 21, प्लस n minus 1 into -3 will be -81, okay? So -3 into n minus 1 will be -81 minus 21. तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, -3n, और ब्रेक दिस, मल्टीप्लाई इट, -102, okay? So -3n is -105. So minus minus gets cancelled, 35, okay? मतलब जो 35th टर्म होगा that will be -81. So जब तुम्हें कोई भी एक पोजीशन निकालना बोले कोई एग्जाम में, then you have to apply this trick, the nth term, okay? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल 3, determine the AP whose third term is 5 and seventh term is 9. So यहाँ पे बोल रहा है कि थर्ड टर्म is 5, so it means that T3 is 5 and the seventh term, that is T7, is 9. अब मुझे AP निकालना है, मतलब स्टार्टिंग से सीक्वेंस को बनाना है मुझे। सो T3 मीन्स A plus
3 minus 1 into d, which is 5. Next, a plus 7 minus 1 into d, which is 9, right? Isn't it? तो ये बन गया a plus 2d is 5 और यहाँ से आएगा a plus 6d is 9. So I'll take this here, a plus 2d is 5. Okay, now we'll subtract this second from the first, so these two gets cancelled. Okay, so 4d is 4, means d is 1. तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस मिल चुका है. तो जब कॉमन डिफरेंस मिल गया, यहाँ पे पुट कर दो a plus 2 into 1 is 5, means a is 5 minus 2, which is 3. So what will be the AP? AP बनेगा first term is 3 because A means the first term, right? So 3 plus 1 करते रहना है, 4, 5, 6 and so on. So this is our answer. Okay, 3, 4, 5, 6 is the AP, is the required AP. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. That is example 4. So एक AP दिया हुआ है. Okay, say 5, 11, 17, 23 and so on. Check whether 301 is a term of the above AP. सो एक AP दिया हुआ है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? लेट्स फाइंड इट आउट दैट फर्स्ट. ओके, सो ये बन गया 6, ये बन गया 6 और ये भी बन गया 6 एंड द फर्स्ट टर्म इज 5. तो चेक वेदर 301 इज ए नंबर प्रेजेंट इन दिस अबव सीक्वेंस. इसका मतलब है कि क्या 301 इस सीक्वेंस में प्रेजेंट है या नहीं है. सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग nth टर्म को 301 मान लेते. वहाँ से कुछ आएगा, राइट? तो प्रूव इट और चेक इट. सो nth टर्म मान लिया. फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, विच इज 301. ओके, तो a बन गया 5, d बन गया 6, so it will be 6n minus 1, 301. So 6n is 302. It means that n is 302 upon 6. So if we break it or divide it, we can see that जो भी n का वैल्यू होता है एक AP में, वो हमेशा नेचुरल नंबर होता है, राइट? बिकॉज n स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट, राइट?
So n is a natural number always. n first, n second, n third, n fourth and so on. लेकिन यहाँ पे गौर करो, n is not a natural number. This means that n is not a natural number. So इसका मतलब है 301 is not a term of the above AP, isn't it? सो गाइस, बच्चों आज के लिए इतना ही है. सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, एपी को, और कुछ अच्छे अच्छे सवाल करेंगे. सो टिल देन, गुड बाय.